Good morning, dear students. Welcome to our English class. Students, as you know, you are having your English test on 4th of January. We will do some revision regarding the test. You need to study according to the revision videos as well as whatever I say you to, right? Students, in your English grammar, you will be having chapters, articles, homophones and homonyms. Along with that, students, you will have to prepare Unit 6 of English as well as you will have to prepare comprehension for your test. So students, we started with articles. You remember we read about zero article. That means there are some places where we are not supposed to use articles. So you need to read all the points which are given in your textbook on your page number 44 and page number 45. Zero article is a very important topic and you need to prepare its exercise also. तो आपको ज़ीरो आर्टिकल बराबर से करना है और उसका एक्सरसाइज भी बराबर से प्रिपेयर करना है, ठीक है. नेक्स्टली यू हैव द डेफिनाइट आर्टिकल. यू रिमेंबर डेफिनाइट आर्टिकल. द इज कॉल्ड एज डेफिनाइट आर्टिकल because it indicates particular noun and the speaker is also knowing about that particular thing, okay, as well as the hearer knows about what particular thing we are talking. So that's its definite article. So all the types of articles you are supposed to learn well. तीनों टाइप के आर्टिकल आपको लर्न करने. कौन से हैं? ज़ीरो आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल. ये तीनों चीज़ें आपको बराबर से लर्न करनी है. हमने देखा कि डेफिनाइट आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, राइट? Students, there are many points given in your textbook regarding the uses of definite article. वो भी आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, okay? Nextly, students, what you will do is you will prepare zero article very thoroughly. Zero article is very important. अभी भी बोल रही हूँ मैं कि ज़ीरो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ज़ीरो आर्टिकल डिफाइन और उसकी जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे. नेक्स्टली वी हैव homonyms and homophones, right? Lesson number 26 is homonyms. So homonyms में हमने क्या पढ़ा था? Homonyms क्या होते हैं? Words that have the same spelling and pronunciation but different meaning are called as homonyms. तो homonyms वो words होते हैं जिसकी spelling सेम होती है, pronunciation भी सेम होता है, लेकिन क्या different होता है? Meaning. Here are some examples we have already read, right? So students, you need to revise this also. Homonyms and homophones में दो ही exercise है, exercise A and exercise B. So prepare all the exercises, okay? Nextly, you have homophones. What is a homophone? Do you remember, students? A homophone is a word that is pronounced the same as the other word but differs in meaning. The words may be spelled the same or may be differently spelled. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि होमोफोन क्या होता है स्टूडेंट्स. होमोफोन वो वर्ड होता है जिसको सही तरीके से सेम तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है एंड कभी कभी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है. ज़रूरी नहीं कि स्पेलिंग सेम ही हो और कभी कभी स्पेलिंग सेम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो, ओके. एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. एक बार सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ लो और उसके बाद में इसमें भी एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी है, वो ही आपको करनी है और डिफाइन लर्न करनी है. सो योर जनरल इंग्लिश सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड. आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. आर्टिकल्स वाला चैप्टर है, उसमें आप ज़ीरो आर्टिकल बराबर से प्रिपेयर कर लो. होमोफोन्स और होमोनिम्स में तो दो एक्सरसाइज है. सो यू नीड टू प्रिपेयर बोथ द एक्सरसाइज प्रॉपरली अलॉन्ग विद द डिफाइंड पार्ट. मैं आज आपको सिर्फ आउटलाइन दे रही हूँ. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग एंड रिवाइजिंग द एक्सरसाइज. तो कल मैं आपको सारी एक्सरसाइजेज एक बार रिवाइज करा दूँगी, बराबर. नाउ टुडे आई एम टेलिंग यू टू डू पर्टिकुलर चैप्टर एंड पर्टिकुलर थिंग्स, राइट? सो यू विल बी डूइंग दैट, ओके. सो यू प्रिपेयर. उसके बाद में कल मैं आपको बता दूँगी विच एक्सरसाइजेज यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट. फाइन. So everything we'll discuss in tomorrow's video, students. For today, you need to prepare
these chapters, and in chapter 26 and 27 आपको एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी कंपलसरी करनी ही है. दोनों चैप्टर मिला के 4 एक्सरसाइज होती है, वो 4 एक्सरसाइज आपको कंपलसरी करना है. ठीक है. So prepare all these stuff. That's your homework for today. Students, do you remember we have also discussed about English comprehension? You all are knowing what is a comprehension. A paragraph will be given to you and you would have to answer particular questions from that particular paragraph. आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसे रीड करके फिर आपको जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आपको आंसर पैराग्राफ में से ही ढूंढना है. ठीक है. दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर. और ये कॉम्प्रिहेंशन आप सबको आता है. हियर इज़ अ शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन फॉर यू ऑल. See, any kind of comprehension can come in your test. Comprehension can come in your test. वो कुछ ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है और आपने पूछा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स. ये ऑलरेडी आपने कितनी बार किया हुआ है और हमें आता है व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ कॉम्प्रिहेंशन, राइट. तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको इमेज में दिखाया है, दैट यू विल बी सॉल्विंग. ओके, आई विल रीड आउट फॉर यू बट आंसर्स यू विल फाइंड बाय योरसेल्फ. And you will just copy the question and write answer in your general English notebook. Okay, it's a part of your revision. तो आप general English की notebook में इसको लिख लेना. आपको पूरा comprehension ऊपर का जो पैराग्राफ है वो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. There is no need to copy the paragraph. Okay, you just copy the question and write down the answer. It's a part of your revision. Okay, so I'm reading out for you. अगर आपको ये इमेज क्लियर नहीं है तो आई विल बी सेंडिंग अ इमेज ऑफ इट टू, सो यू कैन डाउनलोड, जूम इट एंड देन कंप्लीट योर वर्क. ओके, आई एम रीडिंग आउट द कॉम्प्रिहेंशन. स्टूडेंट्स, डू लिसन वेरी केयरफुली. द बिग गेम. द नेम ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन इज द बिग गेम. Jane is in a basketball team. There are 10 kids in her team. Students, यहाँ पे on लिखा है, it's a misprint. आप इसको in कर देना, in. So the comprehension goes as Jen is in a basketball team. There are 10 kids in her team. They are called the West Cows. Their shirts and hats are green. So students, what is described over here? That Jen belongs to a basketball team. Along with that, there are 10 kids in the team and their name, that is the team's name, is the West Cows, as well as their shirts and hats are green in color. तो इतना इन्फॉर्मेशन अपने को ऊपर की 2 लाइन में 3 लाइन में मिला है, राइट. नेक्स्टली व्हाट इट इज सेड, टुडे इज their big basketball game. They play the South Robins. Okay, so the name of the team is South Robins, against whom Jen and her team have to play the game. Okay, their shirts and hats are red and the Robins were the best team last year. तो हियर देर आर 2 टीम्स. पहली जो टीम है जिसमें जेन है, वो टीम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? द वेस्ट काउज. और दूसरी जो टीम है उसमें सब जेंट्स ही है और उस टीम का नाम है रॉबिन्स. एंड दिस टीम, दैट इज़ द टीम ऑपोजिट टू जेंस टीम, इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड दे वर द बेस्ट टीम लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर सबसे बेस्ट वाली टीम कौन सी थी? The Robins, which was opposite to Jane, right? The cows want to be the best team this year. First, they have to bear the Robins. Jen feels happy and scared. She loves to play basketball. She is afraid of the cows will lose. सो व्हाट इज सेड हियर कि जेन को डर लगता है कि ये जो दूसरी वाली जो सामने वाली टीम है, बराबर, वो लोग हमसे जीत सकते हैं या जीत जाएंगे. ऐसा डर किसको लगता है? जेन को लगता है. ओके, नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज द स्कोर इज 4-4. इट इज अ
big game. It is Jane's turn to hit. She steps up to this plate. The ball comes fast. Jane hits the ball far. She gets to third base. John was in front of her. He gets to home plate. The cows win. So students, hope you understood the paragraph. The paragraph is based on baseball and there are two teams. The name of the teams is mentioned over there. Okay, तो ये आपका पैराग्राफ है, मैंने आपको समझाया. भाई जीन नाम की लड़की एक टीम में है और दूसरे टीम में अलग बंदे हैं जो बहुत ही अच्छे से खेलते थे और लास्ट ईयर वो बेस्ट टीम भी थी. तो जेन की टीम में का सामना जब इनके साथ हो रहा था तो जेन को डर लग रहा था कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर एनी हाउ जेन की टीम जीती. तो कैसे जीती वो सब इस पैराग्राफ में लिखा है एंड आई हैव रेड इट फॉर यू. नाउ यू आर हैविंग सम MCQs एंड क्वेश्चन आंसर्स. दैट्स योर होमवर्क. यू विल बी फाइंडिंग आउट. डोंट कॉपी द पैराग्राफ अपने को कॉपी करने का नहीं है, अपने को वो खाली रीड करने का है. क्वेश्चन भी कॉपी करोगे तो उसमें ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज़ you will just read this paragraph and write the answers after reading it in your general English notebook. तो आपको ये होमवर्क भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, MCQ में भी ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर. इवन इन एग्ज़ाम MCQ अगर आते हैं तो आपको क्वेश्चन कॉपी करना है लेकिन ऑप्शन कॉपी करने नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, so students, do revise all the exercises which I told you to. Okay, that's all for today students. Do prepare for your test. Tomorrow we will be doing the revision in detail. See you all tomorrow.